हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेडियोलॉजी डिकोडेड। आज हम बात करेंगे बेरियम मिल स्टडीज़ के बारे में। इसके अंदर आता है बेरियम मिल स्टोमक ड्यूरिनम, बेरियम मिल फॉलो थ्रू, स्मॉल बाउल इंटरस्लाइक्लिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, बेरियम मिल इवेलुएट्स लोअर एंड ऑफ इसोफेगस, स्टोमक एंड डिओडिनम आफ्टर ओरल बेरियम एडमिनिस्ट्रेशन। जो बेरियम मिल स्टडी होता है वो बेसिकली लोअर एंड ऑफ इसोफेगस, स्टोमक एंड डिओडिनम के लिए होता है। नेक्स्ट, बेरियम मिल फॉलो थ्रू और BMFT assesses the entire small intestine after a barium meal। BMFT स्टडी स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए होता है। स्मॉल बाउल एंटरसाइक्लिस evaluates the small bowel by directly infusing contrast through a nasojejunal tube। स्मॉल बाउल एंटेरोक्लाइसिस में डायरेक्टली स्मॉल बाउल में कॉन्ट्रास्ट दिया जाता है nasojejunal ट्यूब के द्वारा। The patient should fast for 6 to 8 hours before a barium meal। Smoking and chewing gum are avoided before the examination to reduce gastric secretion। Pregnancy is a contraindication unless the examination is essential। Suspected gastrointestinal perforation requires water-soluble contrast instead of barium। In case of gastrointestinal perforation, हम वाटर सोल्यूबल आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट यूज़ करेंगे। पेशेंट आइडेंटिटी, कॉन्सेंट, क्लिनिकल हिस्ट्री मस्ट बी कन्फर्म्ड बिफोर स्टार्टिंग। प्रोसीड्यूर शुरू करने से पहले पेशेंट का प्रॉपर आइडेंटिटी, कॉन्सेंट एंड क्लिनिकल हिस्ट्री मस्ट है। रिमूव मेटालिक ऑब्जेक्ट दैट मे क्रिएट रेडियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट। A preliminary scout abdomen is obtained before contrast administration। The scout film assesses bowel gas pattern, calcification and residual contrast। बेसिकली जो स्काउट फिल्म, इसको कंट्रोल फिल्म भी कहा जाता है, ये लेते हैं बाउल गैस शैडो देखने के लिए, कैल्सिफिकेशन देखने के लिए, प्रॉपर पोजिशनिंग और एक्सपोजर फैक्टर देखने के लिए। द पेशेंट ड्रिंक्स बेरियम अंडर फ्लूरोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन। High density barium provides superior mucosal coating। Double contrast studies combine barium with gas producing agent such as ENO or effervescent powder। Next, the upright position or straight position demonstrate the gastroesophageal junction and reflux। RA or right anterior oblique position best demonstrate the pylorus and duodenal valve। LPO or left posterior oblique position better demonstrate the gastric fundus। Supine and prone views helps evaluate gastric contour and emptying। Spot fluoroscopic images are obtained during contrast passage through the stomach and duodenum। Compression technique improve visualization by separating overlapping bowel loops। After the barium meal, serial radiographs are taken to follow contrast through the small bowel। बेरियम खिलाने के बाद कुछ टाइम पीरियड के अंतर कुछ रेडियोग्राफ लिया जाता है पूरा स्मॉल बाउल को इमेजिंग करने के लिए। द फास्ट बेरियम मिल फॉलो थ्रू रेडियोग्राफ इज यूजुअली ऑब्टेन्ड एट 15 to 30 minutes after barium ingestion। Subsequent radiographs are taken every 15 or 30 minutes under the cecum is reached। हर आधा घंटे में एक एक रेडियोग्राफ लिया जाता है जब तक वो सीकम में ना पहुंच जाए। नॉर्मल स्मॉल बाउल ट्रांजिट टाइम इज अप्रोक्सीमेटली 1 to 3 hours। यूजुअली 3 घंटे में वो इलियोसिकल जंक्शन और IC रीजन में पहुंच जाता है। डिलेड ट्रांजिट में इंडिकेट
intestinal obstruction or ileus. Rapid transit may be seen in hypermotility disorder or after bowel surgery. The terminal ileum is last part of small bowel to fill the barium. Spot compression view improve visualization of terminal ileum. During taking IC junction spot film, we use spot compression. The ileocecal valve is examined carefully for narrowing or incompetence. The stecal filling marks completion of the barium will follow through examination. जब पूरा सीकम फिल हो जाएगा वही बेरियम मिल फॉलो थ्रू का लास्ट स्टेप है. The fluoroscopy is used throughout the study to assess bowel motility and peristalsis. Patient repositioning helps separate overlapping bowel loops. Prone positioning spreads the small bowel for better mucosal visualization. पूरा स्मॉल बाउल को अच्छे से स्प्रेड करने के लिए प्रोन लिया जाता है. उसमें म्यूकोसल विजुअलाइजेशन अच्छे से होता है. कंप्रेशन पेडल्स रिड्यूस ओवरलैप एंड इम्प्रूव लिसन डिटेक्शन. एंट्रोसाइक्लिस begins with insertion of nasoenteric catheter under fluoroscopic guidance. एंट्रोसाइक्लिस प्रोसीड्योर में एक नासोएंटेरिक कैथेटर फ्लूरोस्कोपिक गाइडेंस में स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर किया जाता है. द कैथेटर टिप इज पोजीशन एट द डियोडिनो-जेजुनल जंक्शन और डियोडिनो-जेजुनल फ्लेक्सर. नासोएंटेरिक कैथेटर का जो टिप होता है उसको डियोडिनो-जेजुनल फ्लेक्सर में रखा जाता है. करेक्ट कैथेटर प्लेसमेंट इज कन्फर्म्ड फ्लूरोस्कोपिकली बिफोर कॉन्ट्रास्ट इन्फ्यूजन. कॉन्ट्रास्ट देने से पहले फ्लूरोस्कोपिकली देखा जाता है कि कैथेटर टिप करेक्ट पोजीशन में है क्या नहीं. बेरियम इज इन्फ्यूज डायरेक्टली इनटू जेजुनम थ्रू द कैथेटर. देन उस कैथेटर के थ्रू बेरियम इंजेक्ट किया जाता है. मिथाइल सेलुलोज or another neutral contrast may be infused after barium in double contrast enterocyclis. डबल contrast enterocyclis के लिए मिथाइल सेलुलोज और another neutral contrast यूज किया जाता है. Double contrast enterocyclis provides excellent visualization of small bowel mucosa and lumen. Double contrast enterocyclis small intestine के mucosa lumen देखने के लिए excellent visualization देता है. The duodenojejunal flexure is normally located to the left of the spine at the level of duodenal valve. Jejunal loops show a feathery appearance due to prominent valvular convenience. Ileal loops have fewer mucosal folds and appear smoother than jejunum. Valvular convenience extend across full width of the bowel lumen. Small bowel enteroclysis is more sensitive than BMFT for detecting subtle mucosal lesion. Crohn's disease commonly involves terminal ileum. String sign is classic fluoroscopic features of Crohn's disease. Cobblestone mucosa suggests chronic inflammatory bowel disease. Skip lesions are characteristic of Crohn's disease. Small bowel stricture appears as persistent narrowed segment on fluoroscopy. Addition may produce localized bowel fixation and delayed contrast passage. Small bowel obstruction shows dilated loops with delayed or absent distal contrast progression. Partial obstruction allows slow passage of barium beyond the narrowed segment. Complete obstruction prevents contrast from reaching the distal bowel. Intersusception may produce a coiled spring appearance on contrast studies. This is very important to know. Intersusception produce a coiled spring appearance on contrast studies. Small bowel tumors appears as filling defect, irregular narrowing,
mucosal destruction. Polyps produce smooth interluminal filling defects surrounded by barium. Malabsorption syndrome may demonstrate dilated bowel loops with population and segmentation of barium. Celiac disease may show fold thickening or reversal of the normal jejunal fold pattern. Careful fluoroscopic observation is essential to detect transient abnormality that may not appear as static radiograph. Use high density barium for double contrast studies to achieve excellent mucosal coating. अच्छे म्यूकोसल कोटिंग के लिए हाई डेंसिटी वेरियम यूज़ किया जाता है डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी में. लो डेंसिटी वेरियम इज प्रेफर फॉर इवैल्यूएटिंग बाउल ट्रांजिट ड्यूरिंग BMFT. Fluoroscopy should be performed using ALADA principle to minimize radiation dose. Pulse fluoroscopy reduce patient and operated radiation dose. Proper collimation should be adjusted to include only the region of interest. Spot radiographs are obtained whenever an abnormality is detected during fluoroscopy. Compression should be applied gently to avoid patient discomfort and bowel spasm. Antispasmodic drugs may be used in selected patients to reduce bowel peristalsis, such as buscopan and glucagon. Enterocyclis provides better bowel distension than routine BMFT. The enterocyclis catheter should not migrate back into the stomach during study. The contrast infusion rate should be controlled to avoid patient discomfort and bowel over distension. Air bubbles in contrast may mimic intraluminal pathology and should be avoided. Barium leakage to the peritoneal cavity is a serious complication if perforation is suspected. For suspected gastrointestinal perforation, it is a absolute contraindication to barium's contrast. सस्पेक्टेड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल परफोरेशन में हम बेरियम कॉन्ट्रास्ट स्टडी नहीं करेंगे. हाई ग्रेड बाउल ऑब्स्ट्रक्शन इज जनरली ए कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर बेरियम स्टडीज बिकॉज रिटेन्ड बेरियम may worsen the condition. Patients should drink plenty of water after the examination to help eliminate residual barium. White or light color stools for 24 to 72 hours after examinations are expected. This is aftercare related to barium meal studies. Persistent constipation after a barium study may require a mild laxative if prescribed. Radiographers should monitor patient for nausea, vomiting, aspiration, or severe abdominal pain during or after the procedure. Clear communication and proper patient positioning are essential for obtaining high quality diagnostic images. This is basically the aftercare of barium meal studies. The ligament of Treitz mark the junction between the duodenum and jejunum. The duodenojejunal flexure is identified before beginning of enterocyclis. A normal jejunum lies predominantly in the left upper abdomen. The ileum is usually located in the right lower abdomen and pelvis. The terminal ileum is most common site of Crohn's disease. Population of barium may indicate malabsorption syndrome. Segmentation of barium is classical radiological features of malabsorption. The stack of coin appearance result from prominent valvuli convenience in the jejunum. The string sign of contour indicates severe narrowing of terminal ileum in Crohn's disease. These signs and symptoms are very important for competitive exam. Direct MCQs are given on this. The coil spring appearance is suggestive of intersusception. Coil spring appearance intersusception के लिए intersusception का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है. The apple core lesion
classically associated with colonic carcinoma rather than small bowel disease. एप्पल को लिसन कोलोनिक कार्सिनोमा के साथ एसोसिएटेड होता है. persistent smooth extrinsic indentation suggests external compression rather than an intraluminal lesion. An intraluminal filling defect moves with bowel, whereas extrinsic compression usually remains fixed. Enterocyclis is more sensitive than barium meal follow-through for detecting early Crohn's disease and small mucosal lesion. Inadequate bowel distension is most common cause of missed pathology during BMFT. Excess residual gastric content can reduce barium coating and degrade image quality. A complete examination requires visualization of terminal ileum and ileocecal valve. Spot compression images of suspicious areas increase diagnostic accuracy. Documentation should include examination type, contrast used, fluoroscopy time, and any complications. Systematic patient preparation, correct positioning, optimal fluoroscopy, and careful interpretation are the key to successful barium meal follow-through and small bowel enterocolitis examination. Please follow and subscribe Radiology Decoded and share with friends for more videos. Thanks for watching.